Hello students, today we have to study electric field. आज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना था for class 12th, the second chapter. Now, a field or space around an electrically charged object where an electric charge experience electrostatic force of attraction or repulsion. ये वो फील्ड होता है या स्पेस होता है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का, जहाँ पर किसी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को रखने पर वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन. एज यू नो, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. हम इसे ऐसे भी जानते हैं, इसे मेजर करते हैं हम लोग. इट इज़ मेजर्ड बाय अ टर्म नोन एज ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर. ये वेक्टर ई होता है, वेक्टर होता है. कैसे वेक्टर होता है ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है. अब इसे मेजर करने के लिए हम करते क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे. तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं किसी भी पॉइंट को स्पेस में. लेट अ चार्ज Q. इसके बगल में मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज इज अ चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट. ये वो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें चेक करना है. एंड a unit positive charge जिसे हम स्मॉल q से डिनोट कर लेते हैं. दिस इज वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 1 कूलम. ओके. placed at distance small r from q, कैपिटल Q सोर्स चार्ज. ये जनरली आप देखिएगा स्मॉल q को हम लोग टेस्ट चार्ज के फॉर्म में भी लिखा जाता है. दैट इज द टेस्ट चार्ज जस्ट टू टेस्ट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड कैपिटल Q चार्ज. नाउ force experienced by small q. force experienced by small q अगर हम लिखना चाहते हैं तो बाय कूलम्स लॉ का यूज़ करके हम लोग उसे निकाल सकते हैं. इट इज़ q इंटू स्मॉल q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ओके. हियर now this is the force experienced by 1 unit positive charge. I am denoting it by F1. मैं इसे F1 से डिनोट कर लेता हूँ. okay. This is force experienced by a unit positive charge. A unit positive charge. So that is q into 1 by 4 pi epsilon naught r square. Okay, are we clear about it? q multiplied by 1. This much force is experienced by 1 unit positive charge. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. अगर वहाँ हमने 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट्स रखे होते तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता ट्वाइस. ठीक है. नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस, अब आप इसी तरह देखिए, ऑन बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as force acting per unit positive charge. Force acting per unit चार्ज. मैंने आपको पहले ही बताया ये वेक्टर ई से डिनोट. सो अगर इस केस में वेक्टर ई इक्वल्स वेक्टर एफ बाय क्यू नॉट. हियर क्यू नॉट रिप्रेजेंट्स
टेस्ट चार्ज, ये रिप्रेजेंट करता है टेस्ट चार्ज को, जिस पर कि सोर्स चार्ज द्वारा लगाया गया फोर्स काम कर रहा है। ओके, जैसे हमने यहाँ 1 कूलम रखा, अगर इफ़ यू वुड हैव टेकन 2 कूलम्स तो ये जस्ट डबल हो जाता। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्चुअली किसी भी पॉइंट पे एक चार्ज पे कितना फोर्स लग सकता है, इस चीज़ को बताता है हमें पर यूनिट चार्ज। 1 यूनिट चार्ज हमने रखा, हम 2 यूनिट रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग। सो दैट इज़ वाई on basis of this electric field is defined as force acting per unit charge. It is a vector quantity. It is a vector quantity. Vector quantity. इसका डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का है। उस डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ, उस डायरेक्शन is same as of vector F, that is the force. So electric field at a point in space is defined as force acting on unit positive charge at that point. Now अब इसके लिए how to find the expression for vector E. Now हम यहाँ पर एक चार्ज Q लेते हैं, let charge Q be at point A and at a point P there be test charge Q naught is at point P. Distance between them let us consider it as R, हम लोग इसे R ले लेते हैं. Now expression for electric field, expression for vector E हम लोग कैसे derive करेंगे? This we have to get, this is vector E at a point, electric field intensity at a point in the space. Now force acting on Q naught, that is vector F is equal to Q multiplied by Q naught 4 pi epsilon naught R square and R cap. R cap is the direction. If we'll consider both of them as positive, it will be outwards, otherwise inwards. दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन में वो आउटवर्ड होगा. नाउ electric field intensity, electric field intensity, electric field intensity at point P, it is vector E equals vector F by Q naught. If we'll do this, हमें क्या मिलेगा? What we are going to get, vector E equals Q by 4 pi epsilon naught R square R cap. Here you will see R cap, the direction of vector E is same as direction of vector F. Now direction of vector E is same as of vector F. यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि Q नॉट जो टेस्ट चार्ज का फॉर्म ले लिया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप भी समझिएगा इसको. Q नॉट इज अ टेस्ट चार्ज. ये टेस्ट चार्ज हमेशा इतना ही लिया जाता है, जनरली इसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं, लेकिन इसका एक और मतलब ये होता है कि दिस व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट डिस्टर्ब द टेस्ट चार्ज. मतलब इसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि वो टेस्ट सोर्स चार्ज को ही डिस्प्लेस कर दे. तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज लेस देन द सोर्स चार्ज, क्योंकि यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है एट पॉइंट P ड्यू टू कैपिटल Q. नाउ द SI unit of vector E, as you can see, you can easily configure it out. Force by charge, that is Newton per coulomb. SI unit for electric field is Newton per coulomb. Now direction of electric field, we have to consider one more thing, very important thing, the electric field lines. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया. व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines along which electrostatic forces act. They are imaginary lines along which electrostatic force acts. Let us consider as a point charge. Consider a point charge. We'll consider point charge plus q. Plus q point charge हमने यहाँ ले लिया. Now what will be its electric field lines? अगर suppose कीजिए यहाँ पे I am placing a test charge q naught over here. What will happen? As you know, it is always considered as a positive charge, force acting on the positive charge. So positive is going to repel it. यानी ये repel करेगा. So it is radially outwards at every point. It is radially outward. ये radially outward रहेगा. This is for a point charge, positive. Now, same case, if we'll consider a point charge that is negative, a negative point charge, negative point charge. For a negative point charge, what will it be? Let us consider negative point charge. I am taking q naught as we know this is test charge is positive. So what will happen? Negative will attract, that is inwards. So it is radially inwards. From all points it is. So this is, we can say that is radially inwards. Now what happens when we are considering a dipole? Dipole equal and opposite charge is separated by a small distance. Let us consider a positive charge plus q and minus q. So electric field lines will be like this. Radially outwards, radially inwards. You can easily see that for this one. So, according to the force exerted by these charges on the test charge, direction of electric field line is considered. Now these field lines, electric field lines, let us consider some properties of electric field lines. Properties of electric field lines. First, the direction is from, their direction is from positive to negative. From positive to negative. Second thing, they are discontinuous curves. They are discontinuous कर्व्स. ये डिसकंटिन्यूस वर्ड जो आएगा ये आपको कंटिन्यूस मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमें डिसकंटिन्यूस मिलेगा. इसका रीज़न ये है, आप जैसे देख सकते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट इट. सिर्फ नेगेटिव चार्ज भी अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज भी अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी if positive charge is there then negative charge should also be there, or if negative charge is there then positive charge is compulsory. This is not the case over here. Charges सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस इन मैग्नेट्स. मैग्नेट डाइपोल्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे. डाइपोल इज नॉट नेसेसरी. दे आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स एज चार्जेस can exist as monocharges. Third thing, field lines
are closest, field lines are closest where field is strongest, where field is strongest. You can have a look at the dipole form. यहाँ फील्ड लाइन सबसे क्लोज होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है नियर द चार्जेस. हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एट अ पॉइंट के लिए जो एक्सप्रेशन निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, वी कैन हैव अ लुक एट इट. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, it follows the inverse square rule. We can see it follows inverse square rule. Q by 4 pi epsilon naught if taken constant, then R square is inversely proportional. Two field lines never intersect each other. Two field lines never intersect each other. दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. बिकॉज इफ़ दे डू सो, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, इफ़ दे डू सो, इट विल हैव more than two directions at a point, more than two directions at a point, which is not possible, which is not possible, जो कि possible नहीं है. So let it be. We'll continue in the next class. Thank you.